10th. Good morning. So we were doing chapter number 3, that is metals and non-metals in digi. So yesterday what we have done, we have studied the physical properties of metals and non-metals and chemical properties of metals. That is, when metal reacts with water, oxygen or acids, so what are the reactions that takes place. So today we will start with how do metals and non-metals react. Okay. If you are given a hammer, a battery, a bulb, wires, water, and a switch, can you find out whether this substance is an ionic compound or not? Let us find out how, shall we? Group 18 elements are called noble elements. Let us take the example of neon. तो which gas is used in advertising signs? जो advertising signs होते हैं उसमें कौन सी gas use होती है? Neon. Which is the gas Neon has that 10 is neon? electrons and 10 protons. The K shell contains 2 electrons, and L shell has 8 electrons. This electronic configuration of the neon atom is very stable. All elements try to achieve the stable electronic configuration of the nearest noble element. तो कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा. ठीक है, कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, या तो फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स अपने वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, या फिर दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. Let us take the example of sodium. The sodium atom has 11 protons and 11 electrons. There are 2 electrons in K shell. There are 8 electrons in the L shell. The last electron is in the M shell. This is an unstable electronic configuration. देखिए, जब सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. 11 एटॉमिक नंबर है, तो आप देखिए कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. उसके बाद L शेल में कितने हैं, दैट इज 8, और M शेल में कितने हैं, 1. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो सोडियम किस तरह से एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकता है? The sodium atom gives up its outermost electron. Now, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. it has 10 electrons, but the number of protons is still 11. Sodium becomes a positively charged ion called cation. सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होता है, कटायन. तो सोडियम क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम कटायन बन जाएगा. The sodium cation has a stable electron configuration. Now, let us consider a nonmetal, chlorine. An atom of
of chlorine has 17 electrons and 17 protons. The chlorine atom has 7 electrons in the M shell. This is a very unstable electron configuration. How can a chlorine atom achieve stability by gaining 1 electron or losing 7 electrons? आप देखिए कि पहले K शेल में है 2, ठीक है, L शेल में है 8 और लास्ट वाला जो शेल है उसमें है 7. तो वो 7 को लूज करेगा या फिर 1 को गेन करेगा. तो क्लोरीन क्या करेगा, एक स्टेबल ऑक्टेट अचीव करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. Chlorine can achieve a stable 2, 8, 8 configuration by gaining 1 electron and forming an anion. The two oppositely charged ions attract each other with strong electrostatic forces to form an ionic compound, sodium chloride. Sodium chloride exists as aggregates of oppositely charged ions. तो सोडियम क्लोराइड को किस नेम से जाना जाता है, दैट इज टेबल सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड को किस नेम से जाना जाता है, दैट इज टेबल सॉल्ट. How do you think magnesium will react with chlorine? Magnesium has 12 electrons and 12 protons. तो मैग्नीशियम किस तरह से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. सबसे पहले यू शुड नो द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर पता है तो आप इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. 2 आ जाएंगे आपके के में, एल में आ जाएंगे 8 और 2 आ जाएंगे आपके एम शेल में. तो अब आप लोगों को पता है कि एम शेल में से वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर 6 को गेन करेगा. ठीक है, तो देखते हैं. Is this an unstable electron configuration? Magnesium gives away 2 electrons from its outer shell to achieve an octet. तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. ठीक है, और खुद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कटायन. 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. A chlorine atom needs 1 electron for stability. Hence, 1 magnesium atom combines with 2 chlorine atoms to form magnesium chloride, an ionic compound. So knowing that the atomic number of oxygen is 8, mark the sentences that are true. इनमें से जोन से भी सेंटेंसेस ट्रू है हमें वो बताना है. एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, 8. तो फर्स्ट आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑक्सीजन की वो होगी 2 और 8. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की आपको दे रखी है 2, 8 होगी, जबकि एटॉमिक नंबर है 8. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6. ठीक है, तो द फर्स्ट सेंटेंस विल बी रॉन्ग. तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस. टू रीच अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. कितने हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 6. ठीक है, 6 को लूज करने के बजाय वो क्या करेगा, 2 को गेन करेगा. तो टू रीच अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द रिजल्टिंग आयन हैज अ चार्ज ऑफ नॉट गिवन. तो लास्ट इज negatively charged ion is called a anion. That is true. Next comes physical properties of ionic compounds. Ionic compounds are solid at room temperature. Let us see what happens if we whack a crystal of sodium chloride with a hammer. The crystal shatters. Why?
Let us try to investigate some other properties of ionic compounds. See what happens if we whack a crystal of sodium chloride with a hammer. The crystal shatters. Why? तो ionic compounds की first property जो हमने पढ़ी, that is ionic compounds generally are very hard and brittle. Ionic compounds कैसे होते हैं? Ionic compounds hard होते हैं और brittle होते हैं. You can see यहाँ पर इसको hammer से beat करा and it has shattered. Let us try to investigate some other properties of ionic compounds, taking the example of sodium chloride. Ionic compounds have very high melting points and boiling points. Melting point of sodium chloride is 1024 Kelvin. Ionic salts only dissolve in ionic solvents such as water. You have to tell is it true or false. तो क्लास मार्क करिए, आप सबने चैप्टर रीड कर रखा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. Ionic salts only dissolve in ionic solvents such as water. Answer is true. Electrovalent compounds are generally insoluble in kerosene and petrol. So this we have already read in our books that electrovalent compounds are generally insoluble in kerosene and petrol. Is it clear? तो देखिए Electrovalent compounds are generally insoluble in kerosene and petrol. तो इसमें केरोसिन और पेट्रोल डालेंगे तो हम क्या होगा, ये इनसोल्यूबल होगा. They are soluble in ionic solvents, such as water. और वाटर में क्या होंगे, सोल्यूबल. Solutions of ionic compounds conduct electricity. Ionic compounds also conduct electricity in the molten state. Does solid sodium chloride conduct electricity? So this we have already studied that ionic compounds in the solid state do not conduct electricity. Ionic compounds जब अपने solid state में होते हैं तो electricity conduct नहीं करते. Ionic salts impart a characteristic color to the flame. Sodium chloride burns with a bright yellow-orange flame. ठीक है, ये एक्टिविटी हमने रीड करी थी ना, व्हेन आई हैव मेड यू राइट द ऑब्जर्वेशंस. तो अब ये एक्टिविटी आप देखिए कि ये क्या कर रहा है, ये कलर इम्पार्ट कर रहा है फ्लेम को. ठीक है, कलर इम्पार्ट कर रहा है फ्लेम को. कैसा फ्लेम है, दैट इज येलो इन कलर. तो सोडियम क्लोराइड बर्न्स विद अ ब्राइट येलो ऑरेंज फ्लेम. सोडियम क्लोराइड जब बर्न होता है तो कौन से कलर की फ्लेम आती है, दैट इज येलो ऑरेंज फ्लेम. ठीक है, सोडियम क्लोराइड जब बर्न करता है तो कौन से कलर की फ्लेम आएगी, दैट इज ब्राइट येलो ऑरेंज फ्लेम. And copper chloride with a bright green flame. जब Therefore, the flame test is used to identify the elements in an ionic compound.
करती है, सोल्यूबिलिटी, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कंडक्टिविटी के टर्म्स में। जब सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। जब हम फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल नेचर के बारे में दैट इज हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के टर्म्स में बात करें तो दैट इज वेरी हाई। एंड व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, conduct electricity in molten state, and they do not conduct electricity in solid state. So this we have done. Next is reaction of metals with the solution of other metals. Metal ore deposits are a finite resource and non-renewable. Once used, they are gone and will not be replaced. The growing need of iron exceeds 800 million tons every year. If it goes on in this rate, iron ores will be exhausted in 100. So we'll start with reactivity series. When two metals are involved in a chemical reaction, one metal replaces the other metal. But how can we find out which metal will replace the other? Metal that is more reactive displaces the less reactive metal. Can iron displace copper? Yes. Iron can displace copper in copper sulfate because iron is more reactive than. So we know that iron is more reactive than copper. It can displace the copper from its solution. Copper. The reactivity series of metals helps us to understand this. Click on the View button to refer to the reactivity series. ये है आपकी reactivity series, more reactive, and this one is the least reactive. The following activity will also help us to understand this. Take a solution of copper sulfate in a beaker. Drop an iron nail into this solution. Leave the beaker undisturbed for some time. तो यहाँ पर क्या करा, हमने एक आयरन नेल को डिप कर दिया। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा कि ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, ठीक है। तो what has happened to the iron nail? Why did the solution change color? Iron displaced the copper in the solution, resulting in the formation. आयरन ने क्या करा, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इस सॉल्यूशन में से। हमने क्या करा, आयरन नेल को डिप करा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करा, तो रिएक्शन दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर, ठीक है। आयरन ने क्या करा, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से। Of iron sulfate. This displaced metal is deposited on the iron nail as copper. The copper sulfate solution turned pale green to indicate the presence of iron sulfate. Thus, iron, which is more reactive, displaces copper.
However, copper cannot displace iron as it is less reactive than iron. So which is more reactive, copper or iron? Copper is less reactive than iron. Is it fine? Copper is less reactive than iron. The more reactive metal, which occupies a higher position in the reactivity series, pushes out the less reactive metal and forms its own compound. This is called metal displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गया. जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव की जगह आ जाता है. ठीक है, जैसे आपका कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर कर क्या आ गया? आयरन. ठीक है, तो ये हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट. Magnesium is more reactive than iron. तो अगर मैग्नीशियम और आयरन की बात करें तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम आयरन की प्लेस ले लेगा. ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म कर देगा. तो मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस आयरन. यू शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अदर. So, magnesium can displace iron. The higher the position in the reactivity series, the dash will be the metal displacement capacity. Is it stronger or weaker? The answer will be stronger. तो can zinc displace copper? तो अब देखिए कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है या कॉपर है? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, रिएक्शन देखिए. यस, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक क्या है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो यहाँ पर देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट. जिंक ने क्या करा? जिंक ने कॉपर को पुश आउट कर कर कॉपर की प्लेस ले ली. ठीक है, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट. Copper is less reactive than zinc. So no displacement will occur. Based on activity series, we can select suitable metallurgical reaction to separate the metal from its ore. Ore. Class with this your chapter ends. So your homework will be, you have to read the chapter again and I will send the question answers plus the extra questions that will be related to this chapter. आप लोग उसे अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा. तो टुडे योर वर्क विल बी, यू हैव टू रीड चैप्टर 3 अगेन सो दैट द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.